What is up internet? Welcome back to the channel and in this video let's talk about Noise Fit Core. जी हाँ, Noise ने एक और फिटनेस वॉच इंडिया में लॉन्च कर दिया है. Now you can get this for rupees 3,499 although this was launched at a price of rupees 2,999. But in this video let's talk about the good things about Noise Fit Core, the not so good things about Noise Fit Core, and most importantly, should you buy this fitness watch for yourself? Let's get started. Now just like any other Noise fitness watch, इसमें भी आपको बॉक्स में ऑफ कोर्स वॉच मिलती है. उसके अलावा आपको थोड़ा सा पेपर वर्क देखने को मिलता है एंड उसके अलावा आपको Noise का स्टैंडर्ड मैग्नेटिक चार्जिंग केबल भी देखने को मिलती है. Now I know I'm a little late for this review because ये वॉच 6 सितंबर को लॉन्च हुई थी, but I wanted to use this for a good 5-6 days to form an opinion. And now that I have formed an opinion, let's break it. Now starting with the design, मुझे लगता है डिज़ाइन Noise Fit Core का one of the strongest points है. Now I know अगर एक वॉच स्क्वायर होती है या रेक्टेंगल होती है वो एप्पल वॉच की तरह दिखती है, but I am someone who prefers a circular watch dial over a square dial, and I know people have mixed opinions on this, so let me know in the comment section below, what do you prefer, a circular watch or a square or a rectangular watch? But that aside, I really like how Noise Fit Core feels in your hands and also looks in hand, because I have this grey color variant है, but you can also get this watch in charcoal black if you're into that. But overall I feel Noise has got a lot of things right when it comes to design and build quality. Now first, जो इसका build है वो magnesium alloy से बना है and not polycarbonate, and I feel that makes a huge difference on how it feels on your wrist. Second, इसमें आपको वो सर्कुलर बटन देखने को मिलता है साइड में इंस्टेड ऑफ एनी फ्लैट बटन, एंड यू नो मी, मैं सर्कुलर जो ये वाला टैक्टाइल बटन है वो हमेशा प्रेफर करता हूँ ओवर एनीथिंग एल्स. एंड थर्ड, ऑल्दो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये ओवरऑल साइज़ है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मेरी रिस्ट के लिए ये परफेक्ट साइज़ है एंड आई रियली लाइक हाउ इट फील्स एंड लुक्स ऑन माई हैंड्स. एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि जो इसकी वॉच स्ट्रैप्स हैं वो यूज़र रिप्लेसेबल हैं, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड 22 मिलीमीटर वॉच स्ट्रैप से इसके वॉच स्ट्रैप रिप्लेस कर सकते हो. अगेन, ऑलवेज गुड टू हैव ऑप्शंस. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले. नाउ Noise Fit Core में आपको 1.28 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है विद अ पिक्सल रेजोल्यूशन ऑफ 240 by 240. एंड आई वुड से जो इसकी डिस्प्ले है इट्स फाइन. आई मीन लाइक डिस्प्ले इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिससे आप मोस्ट इंटरैक्ट करते हो एक वॉच को जब आप लेते हो, एंड बाय दैट स्टैंडर्ड्स आई वुड से इट्स फाइन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़्यादा ब्राइट नहीं होती. नाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ ब्राइटनेस, बट यू विल डेफिनेटली स्ट्रगल टू यूज दिस वॉच आउटडोर्स, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग इट अंडर डायरेक्ट सनलाइट. एंड सेकेंड, ऑल्दो इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ओवरऑल वो काफ़ी अच्छी है, बट जो पिक्सल रेजोल्यूशन है वो थोड़ा कम लगा मुझे, बिकॉज you will see pixels more often than you would have liked on a fitness watch at this price point. Now I know I can't expect everything at a price of rupees 3,500, right? But मुझे लगता है कि display is one of the fundamental features of a fitness watch, so you have to get that right to give that user experience to your customer, and इसमें आपको ठीक ठाक ही मिलता है वो. बट दैट सेड, अ कपल ऑफ थिंग्स आई रियली लाइक अबाउट दिस डिस्प्ले इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव है एंड आई हार्डली हैड एनी इशूज़ विद मिस टचेस और समथिंग लाइक दैट. एंड सेकेंड, इसमें आपको एजेस पे 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिलता है, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन फॉर अ फिटनेस वॉच एट दिस प्राइस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट द यूज़र इंटरफेस. नाउ ओवरऑल मुझे इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ईजी टू यूज़ लगा. तो अगर आपकी ये पहली फिटनेस वॉच होने वाली है, यू विल टेक नो टाइम टू गेट यूज टू द यूज़र इंटरफेस ऑन द Noise Fit Core. तो अगर आप वॉच फेस से राइट साइड स्वाइप करोगे आपको थोड़े विजेट्स देखने को मिलेंगे, लाइक योर एक्टिविटी समरी, योर हार्ट रेट, योर स्लीप, ऑल दैट स्टफ. और अगर आप वॉच फेस से ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे आपको क्विक सेटिंग्स मेन्यू देखने को मिलेंगे. अगर नीचे से ऊपर स्वाइप करोगे आपको अपने मैसेज नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे. और अगर आप वॉच फेस से लेफ्ट साइड स्वाइप करोगे आपको मेन मेन्यू देखने को मिलेगा जहाँ पर आपके ट्रेनिंग मोड्स, एंड देन देयर आर ऑल्सो अ कपल ऑफ एप्स इन द नेम ऑफ स्टॉप वॉच जो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो. एंड ओवरऑल आई वुड से, unlike some of the Noise watches previously have tested on this channel, the UI is fairly smooth and I didn't face any random jitters or hangs while using this watch. But मुझे इसका user interface थोड़ा सा half baked लगा, and मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ because there are a couple of features missing, like आप इसमें directly alarm set नहीं कर सकते वॉच में, आप इसमें weather भी नहीं देख सकते, and then there is no SpO2 monitoring. And although I know you can't just go and trust the SpO monitoring on your fitness watch blindly,
but it's good to have a feature on your fitness watch, especially during these times. And एक और funny चीज़ जो मुझे लगी इस वॉच में वो ये थी कि जो इसका बैटरी इंडिकेटर है वो हमेशा 100% शो करता है बैटरी, राइट फ्रॉम व्हेन आई अनबॉक्स दिस एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस वॉच फॉर 6 days नाउ, वो अभी भी 100% शो कर रहा है. सो अगेन इट फील्स अ लिटिल हाफ बिट. एंड टॉकिंग अबाउट बैटरी लाइफ, ऑल्दो नॉइस क्लेम करता है कि इसमें आपको 7 days की बैटरी मिल जाएगी. आई कांट टेल यू द एग्जैक्ट फिगर्स बिकॉज अभी भी वो 100% शो कर रहा है. बट अगेन जैसे मैंने अभी बताया, मैं 6 दिन से ये वॉच यूज़ कर रहा हूँ एंड इट हैज़ नॉट डाइड येट. सो आई एम अज्यूमिंग यू कैन गेट 7 days ऑफ बैटरी लाइफ फ्रॉम दिस वॉच. एंड अगर आपको आपके वॉच के स्टैटिस्टिक्स आपके फ़ोन पे देखने हैं, you'll have to install this app called NoiseFit Apex, which is different from NoiseFit Assist and which is also different from NoiseFit app. So I don't understand this approach of having a different app for every new watch you launch. Why can't we just have one app for all the noise watches? I know it's not a big deal, but still, why? But if we keep that aside, NoiseFit Apex app के आपके होम पेज पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, लाइक योर स्टेप काउंट, योर हार्ट रेट, योर स्लीप. एंड देन इसमें भी आपको एक ट्रेनिंग मोड देखने को मिलता है जहाँ पर आप अपने ट्रेनिंग मोड्स फ़ोन से ही सीधा स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ सुपर हैंडी इन सम सिचुएशंस. एंड देन यू कैन गो एंड चेंज सेटिंग्स लाइक कि ऐप नोटिफिकेशन आपको कौन सी चाहिए, आपको कॉल नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, SMS नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए. एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वॉच एज कैमरा शटर, विच आई फील कैन बी super handy in some situations. Okay, if you're still with me, there are a couple of things I really like about the NoiseFit Core. First, it comes with IP68 water and dust resistance, so you can definitely take this out while it's raining, but I will not recommend to take this for your swimming sessions. Second, जो इसकी overall accuracy है इसके sensors की, वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को. Now I did take this out for a couple of my running sessions or while I was working out. जो इसका heart rate monitoring था या step count monitoring था वो काफ़ी accurate था, तो you can definitely rely on the sensors on this watch. But let's talk about the verdict. Let's answer the question you all have been waiting for. Should you buy the NoiseFit Core for a price of rupees 3,499? I would say it's a difficult to recommend watch at that price. Now, with all the software issues and an average display, there are much better options available even at a price of rupees 3,500. But अगर noise software update निकालती है और जो इसके software issues है वो fix कर देती है, I would be more than happy to make a follow-on video. But तब तक के लिए look at other options. So yes guys, this was my quick review of the NoiseFit Core fitness watch. मुझे comment section में बताओ आपको ये review कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा इस वीडियो को like दबाना मत भूलना. और अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं और ऐसे रिव्यूज़ देखने हैं, make sure you subscribe to TKNet and especially hit that bell icon so that you are one of the first ones out there to watch that video whenever I upload it. So yes guys, till then, keep asking and I will see you in the next one.